Hello and welcome. Good evening. This is Vishal Dahiya and you're watching Sansad TV's continuous coverage since morning on P20 Parliamentary Speakers Summit. Today has been a very hectic day full of activities with the inauguration done by Prime Minister of India, Narendra Modi, and followed by the first two sessions in which the heads of delegations, the visiting heads of delegations, deliberated upon two key important theme issues. We've been bringing you details of this particular summit since morning and will continue to do so with the experts panel and our reporters on the ground as well. With me is Amrita Chaurasia. Thank you, Vishal. वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ G20 अध्यक्ष के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहला संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का आयोजन एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज यानी कि 13 अक्टूबर को हुआ, जो कल यानी कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। कल प्री समिट में दुनिया के संसदीय मंच ने लाइव पर मंथन किया। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 उच्च स्तरीय सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 2 अहम सत्रों पर चर्चा हुई, जिनमें SDGs के लिए एजेंडा 2030, उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना, सतत ऊर्जा परिवर्तन, हरित भविष्य के प्रवेश द्वार, और कल जिन सत्रों पर चर्चा होगी उनमें लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, इस पर चर्चा। आज पहले सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि G20 समिट की अभूतपूर्व सफलता के बाद P20 समिट का आयोजन भारत भूमि पर हो रहा है, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आज पहले सत्र के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे, इस पर बातचीत करेंगे विशाल। जी बिल्कुल Amrita, and as I said earlier, we have an expert panel of guests as well with us. Let me first introduce them to you. Dr. Gulshan Sachdeva is joining us. He is professor at the Center of European Studies in JNU. Welcome, Dr. Sachdeva. We also have with us former Ambassador Virendra Gupta, and Professor Shrikant Kondapalli will also join us very soon. Let me begin with you, Ambassador Gupta, and let's start by understanding the diplomatic significance of this particular summit. Now, P20, as all of us know, is part of G20, and going by the turn of events since morning and the way we heard various speakers, including the Prime Minister himself in his inaugural speech, the Lok Sabha Speaker as well, and various other dignitaries, including the IPU President. And again, the key highlight is that the joint declaration has been adopted unanimously, although the formal announcement on what exactly the declaration contains will be made tomorrow. But this again signifies the fact that there is a lot of diplomatic effort which has been made in the background. Well, firstly, as in G20, a consensus on the declaration, we know that there is a lot of division in the world. That signifies the manner in which India has been able to steer the discussions. The moderate approach that India brings to bear on the world stage. So I think that is very important, and the whole world is acknowledging it. The P20 is significant in its own right, because most of the countries of G20 are democratic countries. And for them, Parliament, of course, is an extremely significant institution. Parliament is where the representatives of people debate and take decisions on key issues of the world. So I think for Parliament leaders to meet is a very, very significant development. And I was very struck by Prime Minister in the morning. He made a very important point actually, and I want to bring it out here, is that there is so much a division that we get distracted from paying attention to key challenges of the world. And I think it's extremely significant. There are challenges like climate change issues, terrorism, to which he made a reference to. We have seen a terrible tragedy in the last few days. And there is a challenge of development, hunger, all these issues. And if countries continue to press on with petty political advantages, short-term political advantages, I think what Prime Minister Modi meant was that if that approach were to be set forth, then we will not be able to see our major challenges addressed. So I think that is very significant. Okay, and that's very clearly reflected in the overall theme of P20 and G20, and also the themes of four
sessions there as well. Professor Sachdeva, one Earth, one family, one future, the overarching theme. And when we look at the sub-themes of various sessions, today the two sessions which were held, one was about SDG goals, as Amrita was pointing out, and another on sustainable, energy transition, specifically gateway to green energy. When we're talking about India has taken a lot of stride in this manner. When we look at the global scenario, the message seems to be pretty clear, both from the G20 forum and from the P20 forum, as Ambassador Gupta was also pointing out. Let's look at the challenges. Let's not distract ourselves. Well, I mean, you're right. I mean, challenges are very, very serious. I mean, one should not underestimate those challenges. I mean, some of the issues which you have mentioned, I mean, of course, I mean, whether you SDGs or green transition or women empowerment, all those issues, I mean, these are not new issues, frankly speaking. I mean, because large part of G20 agenda is inherited agenda. But of course, situation has changed this year because of the various reasons. And India has also given a very kind of successful twist to some of these, already issues. I mean, if you look at, say, for example, even SDGs. I mean, now, in 2015, the whole world basically adopted to, SDG, yes. Agenda 2030. But now, after 8 years, I mean, if you look at all the reports from the UN, only about 15% target, we are on the target of all the 116 targets. Mm-hmm. And if you look at some of the major, challenges, look at poverty. I mean, this is number one kind of, the goal, remove poverty from the world. And if you go by the same trend we have seen in the last 7 years, and things have actually become worse in the last few years because of pandemic and also because of different kind of conflicts in the world. So still by 2030, we will have about 600 to 700 million people still poor. Similarly, large number of, the women empowerment issue. I mean, if you go by the same, trends what we have in the last 10, 15 years, and particularly after 2015, and, some of those, again, even if you just go by the UN reports itself, it will tell you it will take about 200 to 300 years. By the time all kind of equality would be given to women. They'll be able to share exactly the same kind of rights, same kind of pay, same kind of position. So here in this context, what India has really again brought under its G20, and now of course some of these key issues they have been brought within P20. One is that, like the twist was given, it's not just only about women empowerment, we are talking about women leadership, women-led kind of development. So, it's a new. Similarly, even on the green transition, so the lifestyle change, because it's not just only about the problem. I mean, of course, it's a global problem, but the kind of per capita consumption what you have, particularly in the developed world. I mean, they have to, of course, they are preaching to everybody else that this is a major issue, but unless they really contain their own, because of course we will take our own responsibilities. The large countries, we obviously cannot have the same kind of living standard what the Western countries have, but obviously the major share, they have to reduce their consumption level. Definitely, so these are the kind of, I think, the issues which India has been able to. ये वो challenges हैं जिनको address करना होगा और जाहिर तौर पर विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लौटेंगे चर्चा की तरफ, लेकिन P20 संसदीय सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्र आयोजित किए गए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति हरिवंश ने चर्चा के बाद समापन सत्र को संबोधित किया। I feel privileged to have got this opportunity to share my points in this session on an issue as critical and as important to the mankind as the sustainable energy transition. Excellencies, we are having this discussion after the successful conclusion of G20 summit under the presidency of India. The summit has laid out the roadmap for an accelerated, strong, sustainable, balanced and inclusive growth of the mankind. Excellencies, the G20 has committed itself to accelerate clean, sustainable, just, affordable and inclusive energy transitions following various pathways with a view to achieve our climate objectives. For ages, the Indian way of living has laid emphasis on pursuit of human excellence in complete harmony with the Mother Nature. It is this harmonious coexistence of the mankind with the Mother Nature which is amply reflected in our ancient text called Vedas, which literally means words of wisdom,
which our great ancestors have left behind for us to follow. I quote an eternally relevant hymn from the Prithvi Sukh, a chant in Sanskrit and a part of the Atharva Ved. It tells, Mata Bhumi Putro Aham Prithivya, which means Earth is our mother and we are her children. The hymn underlines the reverence of the Mother Earth and the obligation of the mankind to take care of her. It also reflects our centuries-old cultural ethos based on the principles of sustainability. Excellencies, the efforts of India under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi have been to adhere to the wisdom inherited from our ancestors and to take our rich legacy forward. The lifestyle for environment, life movement proposed by the Honorable Prime Minister at COP26 is our reaffirmation to the path shown by our ancestors. The vision of life is to live a lifestyle that is in tune with planet Earth and not harmful to her. Excellencies, India has been working steadily to build the ecosystem for sustainable energy transition. This ecosystem consists of three key players: the state, the industry, and the ordinary citizens. All three organs of the state are doing their bit to help bring about this transition. While the legislature and the executive are working as enabler to provide the legislative and policy framework for this transition, the judiciary is ensuring that all stakeholders adhere to their legally defined roles. The industry is acting as a provider for producing clean energy products. The citizens are also responding positively to the cause of clean energy transition by adopting clean energy-based products. Excellencies, despite being at the bottom in terms of per capita emissions, India has set ambitious targets for herself insofar as clean energy transition is concerned. Today, India is well poised to reach the milestones set by it for herself. We have already fulfilled our commitment of meeting 40% of our electricity generation capacity from non-fossil fuels made at COP21 9 years ahead of the target date. Besides, India is working steadfastly to achieve the target of installing 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. Excellencies, the pool of renewable energy in India is steadily expanding. Today, India has the fourth largest installed capacity of renewable energy, fourth largest installed capacity of wind power, and the fifth largest installed capacity of the solar power in the world. We aspire to become a net zero carbon economy by 2070. Excellencies, from Global Solar Alliance to Global Biofuels Alliance, India has all along been pursuing the agenda of sustainable energy transition. Apart from the conventional sources of renewable energy, India is also engaged proactively in preparing the roadmap for promoting emerging sources of renewable energy such as hydrogen energy. India has already launched her National Green Hydrogen Mission with the aim to emerge as the global hub for production and export of green hydrogen by 2030. Excellency, Indian Parliament has been promoting the cause of sustainable energy transition in India. The two houses of Parliament, through general discussions and discussions on the budgetary proposals of the Ministry of New and Renewable Energy, have been contributing immensely towards promotion of sustainable energy transition. Similarly, the Committee on Energy, which is a joint committee of the two houses, has also been helping the government in shaping the general policy and statutory framework for sustainable energy transition through its recommendations. Excellencies, the Parliament of India, along with the Government of India, stands committed to the cause of sustainable energy transition. Before I conclude, I would like to quote the father of our nation, Mahatma Gandhi, who said that, and I quote, the earth, the air, the land, and the water are not an inheritance from our forefathers, but on loan from our children, so we have to hand over to them at least as it was handed over to us. Nothing can be more relevant and worth acting upon these words of wisdom of Mahatma Gandhi. Excellencies, in our common pursuit of sustainable
use of natural resources. Let us pledge ourselves to follow the path of sustainability shown to us by Mahatma Gandhi. Excellencies, very constructive suggestions have come from honorable delegates of different parliaments here. I think this will go a long way in achieving our common objectives. जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह की चुनौतियां इस समय पूरे विश्व के सामने हो हैं, चाहे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, एसडीजीज गोल्स को पूरा करने की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें और एंड ऑफ कोर्स हम अगर आतंकवाद की भी बात करें, प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि जो विखंडित दुनिया है वो इनका समाधान नहीं कर सकती। एक मंच पे आना और मंच पे आने के बाद एक सहमति के साथ आगे बढ़ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है अगर इनका समाधान चाहिए। कितना ज़रूरी है और इस तरह के मंचों को, खासकर G20 और उसके बाद P20 का एक साथ आना, इसे आप कैसे देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है कि सब लोग मिलजुल के बातें कर रहे हैं और एटलीस्ट इस चीज़ में सहमति है कि इस पे काम करना है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अभी भी देयर इज़ ह्यूज लैक ऑफ सिंसियरिटी। देश जो है बातें बहुत करते हैं और काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सब अपना किसी भी तरीके से अभी भी पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करी जाए तो क्लाइमेट चेंज में जब ये नेगोशिएशंस शुरू हुए थे 20 साल पहले, उस वक्त में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रीनर टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ टेक्नोलॉजी बन रही है, जहाँ पे डेवलप हो रही है, वो टेक्नोलॉजी मुफ्त में तो देंगे नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी अगर डेवलपिंग कंट्री को मिलेगी, देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? डेवलपिंग कंट्री पे तो ये लोड नहीं कर सकते उतने पैसे का, तो वो पैसा डेवलप्ड कंट्री देंगे। उस वक्त $200 बिलियन का क्लाइमेट फंड की बात हुई थी और अभी तक एक भी पैसा नहीं आया। तो जब तक कि क्लाइमेट फंड, जब तक कि वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है और उनकी कैपेसिटी है, जो बात को माना गया है उसको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो जब तक उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, अगर सिर्फ हमको ही भाषण देना है कि आप जो है, आपकी तो फिलॉसफी है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो आप वैसे ही रहिए, तो मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये मेरा चॉइस होनी चाहिए। मेरी एस्पिरेशन है कि मैं भी डेवलप तरीके से रहूं, बट उसके बाद में मेरी टेबल जैसे भरी हो खाने के लिए, उसमें अगर मैं 2 चीज़ें खाऊं वो मेरी ऑप्शन है। लेकिन मुझको कोई ये नहीं बताए कि आपको ज़रूरत क्या है इतने सारा सामान लगाने की। अब आप टेररिज्म की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने बोला आज कि इतने सालों के बावजूद भी अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हम टेररिज्म की कन्वेंशन के लिए हमने प्रपोजल के लिए इनिशिएटिव लिया है कई सालों से, उस पर कोई कॉन्सेंसस नहीं है, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करना चाहता है, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज। कितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने रिफ्यूज दिया है, अपने घर में शरण दी है लोगों को, उसका टेरर फाइनेंसिंग उनके थ्रू होती है। तो ये सबको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि सब लोग जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे सिंसियर तरीके से, तब तक बातें तो होती रहेंगी, लेकिन वास्तव में कोई नतीजे नहीं निकलेंगे। Clearly, this also, once again, is reflected very clearly in the overarching theme of P20 and G20. It was like India has sent a very clear message with that particular theme: one Earth, one family, one future. All of us, Vasudhaiva Kutumbakam. All of us will have to come together. Look at the challenges, try and find solutions as well. The entire process is aimed at that as well. But let me bring in, Ambassador Suresh Goyal has here as well. Ambassador Goyal, welcome to Sansad Television. We're talking about the developments in P20, the deliberations which are happening in various sessions. 2 of those sessions have happened today. 2 more will happen tomorrow. Prime Minister made an inaugural address. Several points, several highlights pointed out by Ambassador Gupta and Professor Gulshan Sachdeva as well. But from your point of view, it's not just about challenges also, as the Prime Minister was pointing out. There are some achievements also on which we need to harp, take them further. For example, the use of technology in various fields. Also, the women-led development, areas where India seems to have shown the way to the world. Absolutely. My colleague, Ambassador Virendra Gupta, just now he spoke.
And he actually reflected a lot of reality in the multilateral world, where there are lots of conversations, lots of negotiations. But at the end of it, what we get really is a minuscule of what we aspire for. But that's a life. That's a life in the multilateral world when there are 150 countries each with a different agenda, each talking about the same thing, but different ways, their own national objectives. These things are bound to happen. I'm not that pessimistic. For example, in terms of terrorism, it's very, very important that the countries should come to a common objective in terms of how to deal with the terrorism. And, in the definition of terrorism, ultimately, let us face it, that there are several organizations which resort to militant means for their own independence movement. Okay. Palestinian National Authority, just one example of it. Hamas is another example of it. The whole Middle East, there are some, even in Southeast Asia. If you look at East Timor, what happened there? There were a resort to the militant means to achieve their independence. It happened in Caribbean. Therefore, I think we need to find out how do we get the world together. And that is the reason I would say that it's not just a slogan. I think our mantra or our life source of Vasudev Kutumbakam, one world, one future, etc., this is important, because unless people come together, they will continue to face problems. Look at what is happening today in Gaza. It is happening in Gaza today because the perception of Hamas and Israel in terms of what the Middle East should be is entirely different. Saudi Arabia, Emirates have gone a different way from what they were till even about 5 years ago. There are more aspirations now. They want to be more connected to the Western world. They need technology. They need more funds. But in that process, how do they accommodate the aspirations of the Palestinians? Therefore, the important thing is how to get the world together. And that will take time. But eventually, that's the only way if you want to have a stable world where people can live peacefully and together. Unless they are together, it is not going to happen. Okay, conflict. The world free of conflict. There, something which is a clear message which has been given by the Prime Minister as well when he was talking about how terrorism cannot be of use to anyone. A kind of message which has been conveyed time and again by India at various forums, as our panelists are also pointing out. Professor Sachdeva, I'd like to bring you in, on those 2 points which I was mentioning earlier to Mr. Goyal as well. Women-led development, use of technology, mentioned both by Prime Minister in his inaugural address, and also, incidentally, these are the 2 key theme areas for tomorrow's 2 sessions as well, the last 2 sessions of the P20, session 3rd and session 4th, for focusing on mainstreaming gender equality from women development to women-led development, and how digital technology has played a very important role in transforming people's life. The 2 areas where India has done really, really tremendously well. I mean, you're absolutely right. I mean, compared to many other, I would say, SDG goals, particularly in the digital area. So this is one area where, in fact, a lot of progress has been made despite all the problems in the world in the last couple of years. And India has definitely taken a lead in this. And we know during COVID, we used CoWIN. And after that, all kind of, the way we are basically using for public use. We have created many digital infrastructure, and this is also happening in many other countries in Africa particularly. So in fact, in many of the developing countries are in fact leading the world in digital public infrastructure. So this is one area where India has definitely, I think, taken a lead, and can also, many other developing countries and even developed countries can also perhaps learn from the Indian experience. And so obviously, I mean, this is again going to be a very important issue tomorrow. But the point you were discussing, and both the ambassadors were also pointing it out. Now, what has happened today in the multilateral world? There are, of course, serious issues, and as we know that there is not just only about the seriousness of many of these issues, but also very serious geopolitical tensions. Now, despite all these problems, at least what Indian G20 presidency has shown, that there is a possibility you can talk.
You can come to even consensus kind of declaration which we had during summit meeting, and hopefully we'll have a consensus agreement even tomorrow from P20. Now, it has already been adopted, with unanimity. So, yeah, but it didn't happen in some of the earlier meetings. So Yes. it means, I mean, we have already made progress. But of course, the problems are very, very different. Even when we are talking about, say, green transition. Now, there is a broader unanimity that climate change is a serious issue. I mean, for that, I think there is a less problem, because now everybody accept that there is a problem. But of course, the kind of transition which many developed countries are making, our transition is very, very different, because they are because you know their per capita consumption is already very, very high, and their growth rates are going to be very small. I mean, you know, that's because they are already very mature economies. So they are moving away from the fossil fuel and the traditional forms of energy, and they are moving, like if you look at Germany, I mean, they are moving away. They have already closed down all their nuclear kind of plants, and you know, they are also very, I mean, many other developing countries, many other developed countries, they are also moving more towards renewable. For us, we are also talking about transition, but our transition is different. We are not moving away from nuclear. We are not moving away even from coal, because coal is also a very important source of energy for us. For us, our growth rate is going to be very high. This is what we expect, and our energy demand is going to be very high. So we are adding more and more. All other, so you know, for us, energy transition is of a very different kind. So it may only thing where perhaps we are talking more that more investment would be made where the new technologies are emerging, where the more renewable and others. But you know, so it means those are the kind of on these fronts, what India is showing to the world is a balanced approach. You know, how to move ahead with the balanced approach. But we'll come back to that. But again, the action, Amrita, is now shifting to Parliament. डेफिनेटली विशाल, क्योंकि अब हम अपने दर्शकों को और आपको भी लेकर चलते हैं पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, जहां पे न विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। न विक्रम, क्योंकि पार्लियामेंट में आज एक खास कार्यक्रम होना है, सांस्कृतिक संध्या, और हम देख सकते हैं आपके पीछे क्या सुंदर नज़ारा है, क्या जगमगाहट है, सारे डेलीगेट्स वहां पर आने वाले हैं, रात्रि भोज भी है। आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, हलचलें हैं, हमें बताइए। जी अमृता और विशाल, आपको दिखाना चाहेंगे इस संसद भवन का नज़ारा। बेहद खूबसूरत संसद भवन को और भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। जो विदेशी जो मेहमान हैं, उन लोगों को यहाँ आना है, उनके लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चूंकि हमारा जो संसद भवन है वो अपने आप में भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है, तो भारत के सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का एक अहम जरिया है और भारत के संवैधानिक मूल्यों को भी बताने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे, और डेलीगेट्स यहाँ फ्लोरल ट्रिब्यूट करने के बाद, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो बढ़ेंगे गज द्वार की तरफ, जहां से अंदर जाकर वो लोकसभा और राज्यसभा के जो चैम्बर हैं वो देखेंगे। और साथ ही अमृता, मैं आपको बताऊं कि केवल ये सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, कई और चीजें, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानेंगे। और जिस तरीके से अभी विशाल बात कर रहे थे डिजिटल की, तो डिजिटल एक हमारी संसद एक हाईटेक प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित की गई है, और उस हाईटेक प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हमने डिजिटल का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा जो हमने एनर्जी को लेकर, खास तौर पर पर्यावरण को लेकर यहाँ पर इंतजाम किए हैं, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही इस बिल्डिंग में तमाम ऐसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो कि इस बिल्डिंग को खास बनाती हैं। और यहाँ जो अंदर गैलरी है उसमें दीर्घा में संविधान भवन है, संविधान दीर्घा है। उस संविधान दीर्घा में जिस तरीके हमारी ऐतिहासिक विरासत और पूरी लोकतांत्रिक यात्रा रही है भारत की, वो देखने यहाँ जो विदेशी मेहमान हैं वो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो संसद की जो यात्रा है विदेशी मेहमानों की, वो एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज हम कहें, क्योंकि यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं सचिवालय की तरफ से कि उनका स्वागत यहाँ पर जो भारत की जो संगीतज्ञ हैं, जो वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, उनके जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक तरह से सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश है, और कल्चरल एक्सचेंज अपने आप में एक बड़ा माध्यम है डिप्लोमेसी का, और ये दिखाने का अपनी समझ को जो दूसरे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उन्हें बताने का। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे जो सेशन हुए उसमें वृहद चर्चा हुई, कई अहम मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन ये अपने
अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है जो यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और संसदीय प्रमुख। समझना चाहिए 7:30 बजे का वक्त दिया था उनको, जो डेलीगेट्स आने का जो टाइम है। कार्यक्रम चाहेंगे उसकी रूपरेखा आप थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले डेलीगेट्स आएंगे, उसके बाद गांधी स्टैच्यू पर फ्लोरल ट्रिब्यूट है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सीक्वेंस वाइज हमें बताइए किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस तरफ जो संसद भवन की बिल्डिंग है उस तरफ दिखाएं दर्शकों को। ये देखिए अमृता, सबसे पहले जब जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे तो सब यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सामने आप देख सकते हैं जो गज द्वार है, उस गज द्वार से सारे डेलीगेट्स अंदर जाएंगे जी। तो और यहाँ पर आरएस चैम्बर, फिर उसके बाद आरएस चैम्बर में जाएंगे, यानी लोकसभा चैम्बर और राज्यसभा के जो चैम्बर है उसमें जाएंगे फ्लोरल ट्रिब्यूट करने के बाद। और फिर उस जहां पर उन्हें जो ये संसद भवन जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, तो उससे संबंधित एक जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी दिखाई जाएगी। और ये जो पूरा ग्रुप है वो वहां ग्रुप फोटोग्राफ भी होगी जो पीठासीन अधिकारी हैं और लोकसभा अध्यक्ष उनकी जो अगुवाई करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो संविधान सदन जो अब है उसके गेट नंबर 9 के पास उन सभी लोगों जो पीठासीन अधिकारी आ रहे हैं उनके लिए डिनर का इंतजाम लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। यानी रात्रि भोज पर वो सब एकत्रित होंगे और करीब 9:30-10 बजे के बाद यहाँ संसद भवन से वो अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी रूपरेखा है। इसमें सबसे अहम ये है कि जो संसद भवन की जो गैलरी है वो एक तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, सांस्कृतिक विरासत का, ऐतिहासिक विरासत का, पूरी लोकतांत्रिक यात्रा का। तो वो जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उन्हें ये देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अवसर है जो ये पूरी कॉन्फ्रेंस है उसका। जी नवविक्रम, तो नजर बनाए रखिए आप वहां एंड ट्राई एंड टॉक टू सम ऑफ द डेलीगेट्स एज वेल टू find out as to what is their experience, what do they feel about the Parliament House of the mother of democracy. Now, coming back to this team and taking a cue from there, Ambassador Gupta, lot of colors, a lot of vibrancy out there, and this kind of exchange, as my colleague Navvikram was pointing out, is part of soft diplomacy as well. But I also sense a clear message as to how democracy and parliaments within democracy are really, really important to tackle those challenges which we've been talking about, which are being spoken about, debated and deliberated upon by world leaders at global stages at various multilateral forums. It is important because, as I said earlier, there is lack of sincerity at the level of governments, because governments proceed on the fulfillment of their national objectives. Domestic agendas, which are sometimes petty and short-sighted. So I think it is extremely important that people take center stage, people come into the fray. And I think this understanding and cordiality and sense of maturity will only come when people get involved. You talked about the underlying theme of G20 presidency and also the P20 summit, Vasudhaiv Kutumbakam. So I think one has to, while pursuing national interest, one has to see it in a broader perspective, that until and unless you look at the global good, until and unless you regard the entire world as one family and you're working for everybody's good, your own good will not be served in the long term. Okay. So I think whatever issue that you take, that is the basic problem. And I think people's involvement is extremely important. So summits like P20, are sort of, an indication, or rather an exhibition of the power of participation of people in the democratic process, pointing out as to this is how it is. Let's also bring in Ambassador Goyal here and take his views as well, because this is an interesting amalgamation of diplomacy and democracy, two institutions which work together
to try and find out solutions to the global challenges. Ambassador Goyal, you know, when we're talking about the participation of people, the power of people's participation rather in a democratic system, and the way decisions should flow from there, it has been demonstrated very well in the Indian democratic setup. This seems to be the key message which India tries to send across to the world at every global forum. This seems to be the key to try and find solutions to the global challenges. Do you agree? This is a very important part of life of a democracy, really. Now, a democracy can be sustained only when people are part of it. And people are basically not just an economic or social entity. People are cultural entities. People are thinking. People basically believe in their daily life. People know how to interact with each other. And therefore, when we talk about culture, music, dance, etc., they're not simply just culture. They bring people together, and therefore, in a forum like P20 or G20, when people come together, they actually enhance the country's understanding with each other and the cooperation with each other. One anecdote comes to my mind. Please do give me a minute. I was Director General of ICCR in 2012 when we had ASEAN Summit in Delhi. And in the ASEAN Summit, our responsibility in ICCR was to produce one cultural event to be staged in Rashtrapati Bhavan, which would actually showcase how there are cultural synergies between India and the other members of ASEAN. China had done a similar thing when they hosted a summit. And when we did this thing, immediately the comparisons were brought forward by the various members. Because in that program, nobody would know where India began and the other ASEAN countries ended. They were all came together one common cultural idiom. And therefore, there was no separation between the two. Now, that is something which actually illustrates how important the soft power, I don't call it soft power basically, I call it cultural diplomacy, because culture does enhance interaction and cooperation and understanding, most importantly, between two people. And that is where actually it comes in. And I think it's a great idea. But you cannot do it just by imposing your culture. You have to let the different cultures come together and work together and talk to each other in one common language, one common idiom. And that's the greatest thing about when we say Indian culture, because Indian culture does just that. It accommodates everything that comes to it, and we become common. Really, we become one Indeed. common street. Yes. प्रोफेसर गुलशन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो 4 टॉपिक रखे गए हैं इस बार P20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चारों की अगर बात करें, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाना हो, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास हो, या फिर SDGs गोल्स को जल्द से जल्द पूरा करना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज, भारत का अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में भारत इस समय दुनिया को राह दिखा रहा है। महिलाओं के लिए हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके भारत ने एक दिशा दी है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। और क्लाइमेट चेंज में भारत की प्रतिबद्धता हम देख रहे हैं, कार्बन एमिशन भी हमारा बहुत कम है। भारत की भूमिका और भारत की जो प्रतिबद्धता है उसे आप कैसे देखते हैं, और इससे दुनिया के लिए भारत किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आइए आप भी इसी तरह से सहयोग करिए, खासकर विकसित देशों के लिए? देखिए, ये जो 4 मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें लगभग सहमति है सारे देशों के अंदर। लेकिन ये सारे जो टारगेट रखे गए हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे वो SDG वाला हो, चाहे वो ग्रीन ट्रांजिशन वाला, जो जितने भी टारगेट हैं, उसमें ये दिक्कत नहीं है कि ये सबको उसको जो है टारगेट को पूरा करना है। वो टारगेट सबने मिलके बनाए हैं, और इसमें G20 के अंदर ये मुद्दों को और P20 के अंदर इन मुद्दों को लेके आने का मुझे लगता है एक आश्रय ये भी है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि भारत ने काफ़ी कोशिश की है अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान कि जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं, ख़ास तौर से जो तीसरी दुनिया के मुद्दे हैं, उनको काफ़ी हद तक आगे लेके आने में भारत कामयाब रहा है। उसमें जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को भी उसके अंदर भारत ने बड़े सशक्त तरीके से उसको पुश किया था। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जैसे MDG से बदल के जब हम SDG में आए थे,
उसमें ये था कि एमडीजी जो थे वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे, उनके लिए टारगेट सेट किए गए थे। कुछ टारगेट्स वो पूरे किए गए, कुछ टारगेट्स वो नहीं कर पाए। और उन जो एमडीजीज़ को जब हमने टारगेट्स को पूरा किया था 2015 तक, उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि उस तरीके 2000 से लेकर 2015 तक बहुत काफ़ी तेज़ी से चीन आगे बढ़ा था, भारत भी बढ़ रहा था, लेकिन एमडीजी टारगेट को करने के लिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अब जो एसडीजी के जो सारे टारगेट्स हैं उसमें भारत की भूमिका, अगर भारत तेजी से तरक्की नहीं करता है और ये सारे जो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, या वो जितने भी और उसके सारे टारगेट्स हैं, अगर भारत अर्थव्यवस्था बहुत आगे तेजी से बढ़ती है और इनइक्वालिटी को हम कंट्रोल में रखते हैं, तो दुनिया जो है उन टारगेट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक वो उसको कामयाब रह सकती है। तो इसलिए भारत की उसके अंदर बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, और ऑलरेडी और सारी दुनिया ने उसको कबूल किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं इसमें, क्योंकि ये तो नहीं है कि ये मुद्दे में प्रॉब्लम है किसी में, लेकिन कैसी तीसरी दुनिया की जो उनकी जो ज़रूरतें हैं और जो विकसित देश हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अगर सारी दुनिया के देश जो हैं, चाहे वो यूरोप के देश हो, अमेरिका के देश हो, और चाहे चाइना हो, भारत हो, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ग्रीन अगर सारी जो ये पूरी दुनिया के अंदर माहौल बन रहा है कि 2030 के बाद सारी जो कारें हैं वो इलेक्ट्रिक कार या दूसरी कारें बन जाएंगी, इसका मतलब यही कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 10 साल के अंदर बदल जाएगी। उस ऑटोमोबाइल जो नई इंडस्ट्री आएगी, उस इंडस्ट्री को लीड कौन करेगा? अभी हमको पता है कि पश्चिम के देश उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले देशों में वही लीड कर पाएंगे, या जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जैसे चीन जो है काफ़ी तरीके से वो जो सोलर टेक्नोलॉजी में आगे आ गया है, इवन सारी जो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसेस में पूरा चैलेंज दे रहा है वो पूरे यूरोप के देशों को भी। तो भारत भी उसके अंदर काफ़ी चीज़ों में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की किया। तो अब ये है कि जो मुद्दे तो वही हैं, जो सारा नया विश्व आने वाला है उसके अंदर जो नई तकनीक आने वाली है उसको कैसे, अब उसमें जद्दोजहद रहेगी, क्योंकि अपने नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि टेक्नोलॉजी को जब तक हम सबके साथ बांटेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, हालांकि ऐसे कोई शेयर इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन यह है कि कैसे ऐसा एक माहौल बनाएं जिसमें तरक्की भी हो और सबका उसको फायदा भी हो, अमीर देशों को भी और गरीब देशों को भी। जो प्रधानमंत्री का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। Shared future as well. We're talking about the global future here, but Mr. Gupta, the key takeaways from day one of this significant summit, and one, of course, is the fact that the joint declaration has been adopted unanimously. That is very, very significant and very important, and shows how India's leadership or India's presidency of G20 seems to be showing a different path, towards solutions, towards a shared resolve to find solutions as well. जी हाँ, देखिए, इंडिया का, जैसे प्रोफेसर गुलशन ने बताया, कि जितने भी 4 मुद्दे हमने इस मीटिंग में तय किए हैं, उस सब में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो इंडिया कर रहा है वो एक ग्लोबल साउथ को अगर दिमाग में रखा जाए, और ग्लोबल साउथ की बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में, तो जो इंडिया की प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया ने जो चीज़ करी है, उसको ग्लोबल साउथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। अब आप छोटा सा ये डिजिटल गवर्नेंस की बात करें जी, तो कई दफ़ा ख्याल आता है कि डिजिटल गवर्नेंस की जिसकी बात हो रही है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत दिनों से चल रहा है, वहाँ पे डिजिटल बहुत हमसे भी एडवांस्ड हैं, लेकिन जो इंडिया में हो रहा है वो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है। पेनिट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंट्रीज से, जो लेस रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअरर कंट्रीज हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, अमेरिका में हो सकती है, बट वो टेक्नोलॉजी क्या घाना में अवेलेबल है? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं उस चीज के लिए। तो ये जो प्रैक्टिकल टर्म्स में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड बेनिफिट फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज, इससे उसमें फर्क पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो हम बातें करते हैं,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली जो बहुत सारी चीजें तो डेवलपिंग कंट्रीज को असर करती हैं. And India has walked the talk, specifically during tough times like COVID pandemic, on all these fronts. Absolutely. Use of technology, the COVID platform. Absolutely. So that is, I think, that is why India's role and the prominence that India attaches to these very, very important issues becomes extremely important. Okay. Mr. Goyal, in your views, the key takeaways when we are talking about, and as Ambassador Gupta was also referring to, that it looks difficult, but India is showing specifically in these areas how it can be done. The only thing the world, specifically the developed countries, need to do is that adopt that approach and hold hands for the third world countries as well. There are several things here. It's not impossible, but once you really make a determination to develop the kind of technology that you want to use for penetration right down to the commonest person in any country and utilization of the digital goods, you can, after all, when we did this, we did that basically because we wanted to integrate people at the lowest level of economy into one common structure really, where he or she could contribute and benefit from what we have in the country and develop the economy together. I think basically, from my point of view, what this meeting has achieved most importantly is come to a conclusion and instill that idea in everyone's mind that development and growth cannot be fragmented between the developed world and the developing countries. Developed world may have technology, but when you want to develop, when you want to grow further, you need markets, you need resources. And all those resources like the copper, you have to get it only from Uganda. I think Zimbabwe or Uganda, one of the two countries. If you want to really go for markets for your products, if you want to work on the digital infrastructure, you ultimately cannot do without Africa. You have to go to Latin America. So this idea that you cannot fragment development, that you cannot fragment the world, and therefore global south is as important for the north as north is important for the global south. I think that is one single achievement of the G20 by presenting the global prosperity as one common ambition, as one common objective for everyone for their own common good. Otherwise, singly, nobody is going to benefit. And that, to my mind, is the most important thing. बिल्कुल प्रोफेसर गुलशन, एक सफल आयोजन G20 का हमने देखा, दिल्ली डिक्लेरेशन कितने सहमति के साथ पास हुआ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट रही वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। भारत की कोशिशें, भारत का प्रयास और अब P20 इस वक्त पूरे ग्लोबल उसमें देखे परिदृश्य में भारत की भूमिका को, उसकी बढ़ती हुई भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं और जो दुनिया है वो भारत को किस तरीके से ले रही है? देखिए, जब ये G20 का गठन भी हुआ था उस टाइम उसका मतलब ये था कि जो विकसित देश हैं, पहले भी G7 था, G8 था, कि वो दुनिया की जो दिक्कतें हैं सिर्फ वही उनके द्वारा सॉल्व नहीं हो सकती हैं क्योंकि दुनिया बदल गई जी। इसलिए G20 का गठन हुआ, उसके अंदर भारत का मेंबरशिप मिला और भारत ने उसका स्वागत किया। और अभी इस G20 के इंडिया की प्रेसिडेंसी के बाद मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दुनिया के अंदर दुनिया की जो सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स हैं वो विकसित देश सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा ग्रुप चाहिए जिसको G20 और दूसरे भी ग्रुप बन रहे हैं, जैसे ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन हो रहा है, वो सब चीज़ें भी हैं और उसके भी काफ़ी मेंबर इसके अंदर भी हैं। तो सबको एक साथ मिलजुल कर करना पड़ेगा सारी दिक्कतों के बावजूद, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या दूसरी बातें हो। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से तकनीकी बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, हमको ये उसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात भी कर रहे हैं, हम बात तो भले ही 2050 नेट ज़ीरो की कर रहे हैं या भारत 2070 की कर रहा है, लेकिन 2040 में, 2050 में किस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। अगर हम सोलर को ही देखें,
20 साल पहले सोलर की जो सिचुएशन थी, अब क्या है? इतनी महंगी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोलर कोई नई टेक्निक है या इवन विंड पावर 200 साल से चल रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल बदलाव के कारण आज हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इसी तरीके से चाहे वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं आज भले ही वो एक काल्पनिक बात लगती हो सकता है 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाए। और उसका ये भी नहीं किसी को पता है कि वो जो टेक्नोलॉजी उभरेगी वो सिर्फ विकसित देशों के अंदर से ही आएगी। अब जैसे चीन ने दिखाया है, भारत भी दिखा रहा है कि बहुत सी नई तकनीकें जो आ रही है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो किसी भी देश से आ सकती है। और ख़ास तौर से जिस तरह से अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं और उससे वो तीसरी दुनिया के देशों से, ग्लोबल साउथ से बहुत कुछ निकल के आने वाला है। तो ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नॉर्थ टू साउथ होने वाला है, साउथ टू नॉर्थ भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत हो सकता है, इसलिए हम सबके अंदर मिलकर बातचीत कर रहे हैं। Wonderful. In fact, before we go into the break, quick concluding comment from you, Mr. Gupta, on this aspect. You also mentioned Global South and India being the voice of Global South on various forums. This is something which India has not started doing recently. In the last few years, we have seen how India has put forth the concerns of Global South at global stage, and not only concerns, have also demonstrated the ways to deal with those concerns. I think for us, the Global South acquires a very special meaning, particularly in the G20 context. I think India's initiative to get the entry of African Union as a full member really goes on to make G20 a more representative, I would say fully representative body. And I think I get a sense that the primacy of G20 in the coming years is going to enhance tremendously. Initially when it was set up, it was conceived as an organization to deal with economic and financial issues. But as this G20 summit demonstrated, political and security issues cannot be kept away from the economic issues. They are all intricately connected. Indeed. Then the body that you already have, the UN Security Council, to deal with political and security issues, that has failed miserably. And why has it failed? Because it has failed to reform itself. It is suffering from an inertia. So if that continues to happen, then I think willy-nilly political issues and security issues will also come. And my sense is that in the coming years, this is the high table. This is the most important organization in the world, and India has a chance to play a legitimate and due role in the international affairs through this organization. And not the chance, but also the opportunity, but also India has demonstrated its ability to play that significant role. Thank you so much, Ambassador Vijayendra Gupta, Professor Gulshan as well, and Ambassador Suresh Goyal for joining us on this show. We were talking about various aspects of the P20 summit and the road which lies ahead in terms of finding solutions to the global challenges which all the world leaders in G20 and the head of delegations from various parliaments of these countries have been deliberating. We'll continue this coverage, but we'll take a short break.